तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Yes, I have seen Asti Banara on stage. How are you, Asti? Fine? I'm taking your presentation. So, please, children, open your chapter number 11, Earth, Sun and Moon, page number 139. Till then, I take your presentation. Wait a minute. Hans, Anil Kumar. After that, Archan, Aryan Yadav, Atman Gami, Ayush Hua, Daksh Rajpura, Dev Padalia, then Dharm Parasra, Yani Gami, Yani Patel, Hat Bhalodia, Happy Pandit, Jenil Bopalia, Jia Adishna, Kavya Bua, Visha Detroja. After that, Mahi Sheta, Matt Patel, Mihir Popat, Nitya Tilwa, Om Kakashaniya, Sanvi Agara, Shlok Adroja, Shreya Vashariya, then Shia Patel, Tirth Jetloja, Visha Aghara, Breja Ayushi, Bans, Vishwa, Yana, Ramshania, Yashvi Sheta, this much is present, Yashvi Sheta, then Yatri Vilpara, and then Panara Hasti. So, children, let us recall of this chapter. Let us introduction. Let us take introduction. So today there is only introduction I will give. You already aware about the solar system. The sun and the celestial bodies that revolve around it form the solar system. Right? Then planets, also comets, asteroids, satellites of various planets and dwarf planets in solar system. It's called solar family.
right? What is satellite? A satellite is a celestial body that orbits a planet. Planet के आजू बाजू जो celestial body घूमता है अपनी orbit में, that is called satellite. All planets revolve around the sun in fixed path, that is called orbit. सभी planet जो है sun के आजू बाजू घूमते हैं लेकिन fixed path, that is called orbits. If we give order-wise name from the sun, the 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And there is last Pluto, which was earlier considered as a planet, but now its separate category is called dwarf planets by the International Astronomical Union. International Astronomical Union is IAU. कब से उसको ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल किया था प्लूटो को? इन अगस्त 2006. सो सन से सबसे नजदीक का है प्लैनेट मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. उसके बाद प्लूटो. लेट अस सी अबाउट द अर्थ, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, राइट? Earth is a different from all the planets in the solar system. Why? Because it has air, water, and soil. And there is atmosphere on the earth which protect it from the harmful ultraviolet rays of the sun. Besides, on the surface of the earth, oceans, rivers, mountains, valleys are there. But what is inside the earth? Earth के नीचे, inside the planet. According to scientists, Earth is not a uniform solid sphere, right? There is 3 layers: crust, mantle, and core. Further, core is divided into 2 parts: outer core and inner core. This we will understand in this chapter. After that, we will understand about the sun. Sun is also a star, that you know, and it is closest to the earth, and it made of hot burning gases, and the thin layer of atmosphere, sun के आजू बाजू जो thin layer है atmosphere का, that is called corona. अभी का जो कोरोना है वो नहीं, right?
and it has diameter. Sun का diameter कितना है? 13,92,000 kilometer में diameter. 13,92,000 kilometers. Right? And Sun is made up of mainly hydrogen and a helium. हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ और सन का सेंटर जो है दैट इज नोन एज कोर. हाइड्रोजन गैस चेंजेस इनटू हीलियम. हाइड्रोजन गैस चेंज होता है रिएक्शन से हीलियम एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट and light energy that we receive on Earth. That's why solar energy is most important source of energy. Without solar energy, there is no any life on the Earth. And it is inexhaustible source. Inexhaustible means something that will never finish. कभी न खत्म होने वाला, कभी खत्म नहीं होगा. Then let us see about the moon. Moon is also spherical like the sun, and it made up of rocks, and there is no air on the moon. And the moon is the natural satellite of the earth. अर्थ को सैटेलाइट है, उसका नाम मून है. The special feature of moon is that the moon does not have any light of its own. उसका लाइट नहीं है. The moonlight we see is actually reflected sunlight. सन के रेस उसके ऊपर उसके सरफेस पर गिरते हैं एंड दैट रिफ्लेक्ट्स. दैट्स व्हाई वी कैन सी द मून. नाउ लेट अस सी अबाउट द सरफेस ऑफ द मून. सरफेस कैसी है मून? ड्राई एंड डस्टी एंड इट कवर्ड विथ क्रैटर्स. क्रैटर्स मतलब बड़े बड़े खड्डे, mountains, valleys, इसको पढ़ा है. Craters are formed. ये craters क्यों form हुए? Because the meteoroids crash into the moon's surface. Meteoroids उसके ऊपर गिरते हैं और उसकी वजह से craters उसके सरफेस पर हो गया, मून की सरफेस. अब ये क्रैकर्स जो हुए, इतना सारा गिरता है ऊपर मून के सरफेस पर, हमको आवाज तो सुनाई नहीं देता. Why? Because there is no air on the moon. Water we need. There is no air or water on the moon. That's why. That's why we cannot. There is no sound can be heard. We know that sound needs a medium to travel. And moon has gravity also that pulls all objects toward its center. जैसे कि हमारी अर्थ को एक ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका, वैसे मून को भी अपना ग्रेविटी है. बट द ग्रेविटी ऑफ मून इज अबाउट 1/6 द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अर्थ से 1/6 टाइम. नाउ लेट अस सी अबाउट द फेजेस ऑफ द मून दैट वी सी. हम जो बोलते हैं पूर्णिमा है,
आज अमास है. What are the phases of the moon? वो क्यों होता है? When the moon revolves around the earth, अर्थ के आगे जो मून घूमता है, its shape appears to change day by day. Day by day उसका change होता है shapes. The changing shapes of the moon are called phases of the moon. उसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में. नाउ मून पर कितने मिशन हुए और फर्स्ट मिशन कौन सा था? Man has made the historical trip on moon. The first man to land on the moon were the crew of the American space mission. American space mission. उसका जो नाम था Apollo 11. It was launched from Kennedy Space Center at Florida. फ्लोरिडा में से ये छोड़ा गया था. वहाँ पे कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहाँ से ये अपोलो 11 लॉन्च किया हुआ. ऑन जुलाई 16, 1969 कब हुआ था? डेट 16 जुलाई 1969 को ये रॉकेट that carried it into space. कौन सा रॉकेट था? Saturn 5 नाम का रॉकेट. तो अपोलो 11 को के अंदर कितने साइंटिस्ट थे? एस्ट्रोनॉट्स. साइंटिस्ट कुछ एस्ट्रोनॉट्स, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन, ये 3 लोग थे. एंड उसमें सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग was the first to step out and thus become the first man to set foot on the moon. कौन सी डेट पर? July 20, 1969. Then he and their colleagues, that means Aldrin and other Michael Collins, 2.5 hours वहाँ पे रहे मून की सरफेस पर and collect rock sample. वहाँ के जो रॉक के सैंपल लिए to bring back the earth. अर्थ पे लाने के लिए. वाई? रिसर्च करने के लिए. वहाँ पे कैसी रॉक कैसे है, दैट्स फाइन. सैंपल लाने के बाद यहाँ पे रिसर्च हो सके अर्थ पे. उसके हिसाब से साइंटिस्ट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली. मून पर कैसा सोइल्स है, कैसे रॉक्स है. After that, so many missions is there. First mission Apollo 11 था. Now we will take some information about artificial satellites, man-made satellite object that orbits the Earth. जो मैन ने बनाया हुआ सैटेलाइट. उसके बाद तो मैन has sent so many satellites on the for communication. Satellites send signals for TV and radio programs and telephone calls. उसके लिए भी सैटेलाइट काम करता है. Navigation satellites help ships and aircraft find their way. उसको रास्ता पता चले.
Astronomy satellites carry telescope into space. Telescope ले जाते astronomy satellites. And weather satellites help in weather forecasting. वेदर कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, तो वो हमको कैसे पता चलता है? वेदर सैटेलाइट्स। नाउ इक्लिप्स के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। इक्लिप्स मीन्स टू बी हिडन। When sun, moon and earth comes into a position as so they are all in straight line, जब वो तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, eclipse happen. Sometimes earth comes between the moon and sun, and sometimes moon comes between the sun and the earth. At that time eclipse occurs. Lunar eclipse. The earth comes between the sun and the moon. It blocks a lot of sunlight from reaching the moon and creates a shadow. Sunlight block कर देता है क्योंकि अर्थ बीच में है, सन एंड मून को, और शेडो फॉर्म करता है। इस कॉल्ड लूनार इक्लिप्स। Then basically lunar eclipse we have seen now solar eclipse. When the moon comes between the earth and the sun, the moon बीच में आ जाता है, earth and sun के बीच में। It blocks some parts of the sun. sun के रेज का पार्ट ब्लॉक कर देता है, some parts of it. इसको सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में भी पार्शियल और टोटल। पार्शियल मतलब थोड़ा सा पार्ट ब्लॉक करता है सन रेज का। टोटल सोलर इक्लिप्स मतलब सन के पूरे रेज जितने आते हैं वो टोटली ब्लॉक कर देता है। ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स the sun cannot be seen at all. Total solar eclipse जब होता है, sun दिखाई नहीं देता। The moon shadow also has two parts. उनके बारे में हम समझेंगे अम्ब्रा एंड पीनम्ब्रा के बारे में ये चैप्टर में डिटेल में। So in this chapter we will understand this type of topics. Children, and now let's see chat words. Yes, I read now. Jana Damsania has amazing cat. There is a full moon at waterfall. It makes rainbow. It is not called rainbow. It is called moonbow. Yes, very good. Keep it up, Jana. Fine. Good fact. Amazing fact. Then another children. Herself get repeated. Okay, fine, good, children. Now I would like to unmute Mahi Sheta, then Babika. First, I will unmute बबीता निशा। बेटा पूरा नाम क्या है आपका?
I unmute you already. Please on your video. Kavita, are you hear me? Kavita, I already unmute you. This is a full name. I will unmute now another children. Mahika. 1 minute. Wait a minute. Mahik. I unmute you. Please on your video, Mahik. सर जो सन है हम उसके पास सॉरी सर वो डाउट नहीं था सर जो वो एस्ट्रोनॉट था नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो वापस भी आया था अर्थ पे मून से आकर यस he came back. सर बट मैंने तो सुना है कि जितने लोग आउट ऑफ अर्थ मतलब स्पेस में गए ना वो लोग वापस नहीं आ पाए अब तक नहीं बेटा ऐसा नहीं and that is तो सर वो true. परफेक्ट स्पेस पे तो लैंड नहीं हो सकते ना कल्पना चावला जो इंडियन ओरिजिन की थी जो कल्पना चावला उसको ये एक्सीडेंट हुआ था एंड शी नॉट केम जब वो वापस आ रहे थे तब उसका स्पेसक्राफ्ट पूरा ब्रेक हो गया था एंड ऑल द क्रू मेंबर डाइड इन दैट एक्सीडेंट ओके सर प्लीज ऑन योर वीडियो माही यस सर Yes, sir. On your video? Yes, sir. I on my video. Sir, तो जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो गया था, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग से के नासा से गए थे, तो वो वापस नासा की उसी प्लेस पे लैंड हो गया, कोई और प्लेस पे भी लैंड हो सकता है। उसके लिए स्पेशली तैयार किया होता है लैंड नासा ने वहीं पे उसको उतारा गया अंडरस्टैंड मतलब जहाँ से जाता है वहीं पे उतरता है ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है वो लोग को वो कहीं और कौन सी स्पेस पे उतरना हाँ ओके अंडरस्टैंड माही Yes, sir. Thank you, sir, for solving my doubt. Welcome, Mahi. Let us see now. Alice Jalaria. Alice, I unmute you. Wait a minute. Alice, please on your video. Alice. सर हाँ बोलिए एलिस वो व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया है व्हाट बेटा वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा हाँ क्या आया बेटा उसमें कुछ मैसेज है वो क्या है वो तो बेटा मैं अभी तो ये ऐप पर हूँ ऑनलाइन हूँ क्या है बताओ सर वो मुझे भी नहीं पता कुछ है ओके आई विल सी सर नाउ आई वुड लाइक टू unmute another children there is Atman Ram let me unmute Atman 1 minute please on your video Atman Gami hello sir on your video okay sir
Yes, sir. Yes, Atman. Sir, ये रहा ना WhatsApp. How are you? सर नहीं आया. Fine. ग्रुप में आया है तो सबको आया ही होता है. Yes, sir. Hello, hello, sir. हाँ जी, सर कौन बोल रहा है? MCQ कब कर? मैं नेटी बोल रहा हूँ. हाँ बोलो बेटा. सर वो नेटी. आपने चैप्टर रीड करवाया, इसके बाद हमको क्या फिर MCQ कब करना है हमको? नो, अभी तो कल से चैप्टर स्टार्ट होगा. दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन. कल से चैप्टर स्टार्ट होगा. रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन कल से स्टार्ट होगा. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? टुडे देयर इज नो एनी होमवर्क. Yes, sir. Only you have to read. Only you have to read the chapter from Okay, sir. textbook. Okay? Okay, sir. Bye everyone. Have a nice day. Take care. Bye, sir. Thank you. Bye, Bye. sir. Bye, sir. Take care everyone.